Hi everyone! It's a beautiful weather outside. Wanna go out? Let's go. I don't know where we will go, but let it be unplanned one. Alright then. Let me just get ready and I'll see you in some time. Hi everyone! I'm back. I know I have taken a huge break from YouTube videos. So today's video is about strolling outside. There was a lockdown going on in my city, and because of that I was not going anywhere. It's been so long that I was at home, and now that things are a little better, I thought let me just go out and see nearby places. Maybe I'll show you some stuffs. So yeah, I don't know if I can capture enough to show you or not. So yeah, anyways, let's begin this video and let's see. चलिए, जहाँ हमें लेके जाए सवारी वहाँ हम चलते हैं. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways ahead of time. I got an auto and now I am going to see if SGNP is open or not. If yes, it's awesome. If not, let's see. On the left side, put it up in your much later. Well, अभी हम ऑटो में हैं वापस और हम कहीं और जा रहे हैं. No! No! क्योंकि जिस जगह पे हमें जाना था वो क्लोज्ड थी, इसलिए हमने फिर यू टर्न मारा और हम अभी जा रहे हैं कहीं और इसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा भाई. तो ये होता है अनप्लान जर्नी में कि आपको खुद को ही नहीं मालूम कि आप क्या करने वाले हो. इट्स लाइक सरप्राइज फॉर यू. सो चलिए इस एडवेंचर को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं. So well, the plan again changed and now we are at some another beach. A bit of an adventure I'm having right now and properly. So बीच पे जाने के लिए हमें ट्रेकिंग के शूज़ पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ता कुछ ऐसा है. वैसे प्लान कुछ और था, बन कुछ और गया. अब जाके थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं आसपास में क्या है क्या नहीं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे जा सकते हैं. ओ माय गॉड, दिस इज ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. लेट्स गो दिस वे. So everybody is coming over here, you know, for having a nice air, some good, good time. My mom is here. Hi, Ma. How you feeling? Good. Nice. Yeah, a good exploration, right? इधर से अच्छा दिख रहा है, सामने वाला बहुत क्या seriously? सामने वाला बहुत अच्छा दिख रहा है. अच्छा, it's okay. I guess it's okay. इसको Not chill- bad. chill बोलते हैं ना, chill. Yeah. Look at this. Oh my God. चलो चलो. Hi. Whoa. Yeah, Ma. What's up? Seeing all the water rain fill your eyes, doing things they know, talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. And here I am at Mud Island, and the plan was different. The plan was to go to Sanjay Gandhi National Park. SGNP is not yet open, so that's the reason we plan to explore other areas if possible, and that's the reason we came to Mud. And yeah, this is the place where a lot of shootings happens. So let me show you where exactly. So if you see
from here behind me till this entire road. This is the place where a lot of TV serials, web series, यहाँ पे बहुत सारे शूट होते हैं. मैंने खुद ने भी यहाँ पे एक शूट किया था. It was for Alt Balaji and there was one scene with Ram Kapoor. In the end there is one house in which I shot. So yeah, this side मैंने शूट किया है. बाकी यहाँ मठ में बहुत सारे शूटिंग्स भी होते हैं. I will try to cover any of these villas or bungalows if possible. क्योंकि क्या होता है कि अभी पैंडमिक है, इसलिए आई एम नॉट श्योर दैट anyone will be like allowing anyone to enter into the into this kind of spaces because social distancing is important. Here I am not wearing mask because there is nobody nearby. Like बहुत दूर लोग हैं, and that's the reason I am here and I am like talking like this. I am showing you this. Let me show you one more thing. So this beach is more of a rocky kind of a beach. Like you will see a lot of rock patches because I don't know the reason. If anyone knows the reason why this beach or what is the name of this beach, let me know in the comment down below because I don't know. I just know this mud, not entirely, just little bit because I used to come for shoot. And yeah, but I know one thing. Let me show you that. Come this side. So, can you see this? This part. That is Aksa beach. That I know. If you remember that song, तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ चलती क्या. So well, that is the one. But I don't see anybody over there. I think it's closed. Maybe it's closed. When we will go from here, we'll check it out. That part. If it's open, then we'll go. Otherwise, maybe next time. Can you see one golden a triangle kind of a thing over there? Can you see that? Let me show you. See, a golden like this. That is Pagoda Temple, and near to that there is a SL World. When I came first to Bombay, I was super excited to see SL World, Water Kingdom, and yeah, like it's been ages and I haven't been there. So yeah, that is there. This mud is coastal line, right? So there are naval bases here. Like further if you go by road, then you will see there are like INS Hamala and there are other naval bases too. As you can see, ये क्या है पता है? These are some corals. It's gonna be hard. You run, drive, roll all your mind. You run, drive, roll all your mind. You run, drive, roll all your mind. You run, ये जो फ्री में हमें एयर मिलती है, ये जो हमें फ्रेश ब्रीज मिलता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, इसकी हम वैल्यू नहीं कर देते हैं. बट वी शुड ऑलवेज वैल्यू वट एवर वी कैन. बी ग्रेटफुल. हाँ, ये 4 हो गई. 2 3 4, ये 4, ये 4 ब्लैक, 2 3 4 वो हो गए. ये वाला में
वो बोलेंगे कि हमको भाई बोल के खुद नजर आ रही है। ये देखो वाओ कलर देखो इसका। ओह शिट दिस इज सो गुड। नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम बिकॉज शाम होने को आई है और हमें अंधेरे तक यहाँ नहीं रहना है। एंड इट वाज अ गुड एक्सप्लोरेशन बाय द वे। ज़्यादा कुछ तो ऑब्वियसली हम बीच पे नहीं कर सकते क्योंकि हाँ अगर मैंने आउटफिट वैसा पहना होता तो शायद मैं कुछ योगा के पोजेस करती थी, पर वेल प्लान तो कुछ और ही था एज यू गाइज नो। तो बस अब हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं घर पे। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही कुछ हम क्या करेंगे अभी से अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, मतलब अनएक्सप्लोर्ड नहीं एक्सप्लोर्ड प्लेसेस ओनली, बट अनप्लैंड हम अनप्लान रखेंगे। कहाँ जाना है नो आइडिया, विल जस्ट गो। हुआ तो इट विल बी यू नो एन अमेजिंग एडवेंचर, नहीं हुआ तो फिर सुपर फ्लॉप एडवेंचर। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। I'll just end the video now and I hope you like this video. Anyways guys, thank you so much for watching our video and stay tuned for the next. Bye bye.